Okay, so good morning, students. So in the last class, we have discussed about the respiratory system. So we have discussed till larynx side. Right? So before continuing with that, let us revise again from the beginning. Start करने से पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं. Okay. So what do you mean by respiratory system? It mainly means what? When you breathe, जब तुम लोग सांस लेते हो उसको बोलते हैं respiratory system. मतलब in short I'm saying. So what do you breathe in? You breathe in oxygen and you breathe out carbon dioxide. Understand? Mahinur. Okay, so what happens? Human respiratory system. Respiration means what? When you breathe. So what do you breathe? You breathe in oxygen and you breathe out carbon dioxide. These are the two gases which mainly takes place during this human respiratory system. And who is leading the role in reproductive system? The lungs. Your lungs mainly takes part in it. And in your lungs, what happen? Exchange of gas. Exchange of gas like what? Just now I have said, no? Carbon dioxide and oxygen. These are the two names of gases which takes place during your respiratory system. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है जब तुम लोग सांस लेते हो तो क्या कौन सा गैस अंदर लेके जाते हो तुम लोग ऑक्सीजन और बाहर जब तुम लोग बाहर मतलब वो सांस लेते हो तो कौन सा गैस बाहर लेके जाते हो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन्स ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादा काम करते हैं लंग्स और लंग्स के अंदर क्या होता है लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन Did you understand this first slide? Yes, ma'am. Okay. Okay. Next is two types of respiration you'll be getting. That is external respiration and internal respiration. हम लोग को दो टाइप्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा क्या है बोलो external respiration or internal respiration. So external respiration means what? External means breathing out. This one, breathing out. When you breathe out, it means that. So what happens here in the external respiration? There is exchange of gas. There is exchange of gas in what? In between your blood and your lungs. Understand? In between your blood and your lungs, it usually takes place. And what happens here? Your chest will contract. Chest contracts means what? Your chest will get small. When you breathe in, what happens? Your chest, it will become small or not? So it means that contracts means it will compress, it will become small. And your diaphragm, this is your diaphragm. Understand? This is your diaphragm. It will relax. It will relax. Your chest will become small and your diaphragm, it will relax. तो यहाँ पे क्या होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में मतलब ब्रीदिंग आउट सांस बाहर लेके आना तो यहाँ पे क्या होगा चेस्ट ये जो चेस्ट है छाती है ये कंट्रैक्ट होगा कंट्रैक्ट मतलब अंदर अंदर खींचेगा और छोटा हो जाएगा और ये डायफ्राम जो है रिलैक्स होगा रिलैक्स मतलब थोड़ा आराम मिलेगा उसको आराम मतलब जैसे कि रिलैक्स मीनिंग रिलैक्स का मतलब पता है ना तो रिलैक्स होगा okay. So next is breathing in which is also known as internal respiration. So what happens here in between blood and your cells there will be it will take place and what happens in this internal respiration your chest it will expand it will grow in size understand it will expand and
what happens here? Your diaphragm, it will contract, it will become small. तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये चेस्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये जो डायफ्राम है छोटा हो जाएगा. तो यही है डिफरेंस इन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ मैम, ये बिटवीन द रिपीट मैम. ना मैम. Repeat. Okay. So two types External of. respiration. Okay, I'll repeat both. Okay, so what happens here? Here in the respiratory system, you will find two types. That is internal respiration and external respiration. So in the external respiration, what will you find? Which means what? Breathing out. I mean, when you breathe out, it is known as external respiration. So what happens here? Here, gases, exchange of gases, that is what, carbon dioxide and oxygen. So exchange of gases happens here in between what? In between your blood and your lungs. Understand? And what happens here? Your chest, this is your chest. It will contract. Contract means what? It will become compressed, it will become small. And your diaphragm, it will get relaxed. Understand? It will get relaxed. So this is known as external respiration. तो external respiration में क्या होगा? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा. कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, किसके बीच में होगा? ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चेस्ट कंट्रैक्ट होगा. चेस्ट कंट्रैक्ट मतलब चेस्ट जो छाती है तो वो अंदर खींचेगा, ठीक है, मतलब छोटा हो जाएगा. और ये जो डायफ्राम है, ये रिलैक्स होगा, मतलब थोड़ा आराम पाएगा इसको. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. सो इन द इंटरनल रेस्पिरेशन व्हाट विल यू फाइंड? देयर विल बी participation in between what? In between your blood and your cells. And here what? हाँ? मैम इधर एक्सचेंज ऑफ गैस तो होगा इसमें भी. Yes. Same. And here what happens? Your chest, it will expand. बड़ा हो जाएगा. Yeah, it will grow. And here what happens? Your diaphragm, it will contract. It means what? It will compress. It will constrict. Means it will become small. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? यहाँ पे ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज होगा. ठीक है, और यहाँ पे जो चेस्ट है एक्सपांड हो जाएगा. एक्सपांड मतलब बड़ा हो जाएगा. और ये जो डायफ्राम है ये छोटा हो जाएगा. Is it clear now, everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Thank you ma'am. Okay, so next is upper respiratory tract. So in the upper respiratory tract, what are the things which are included? First is your nose and your mouth. This is your mouth, this is your nose. So what happens here in your nose and your mouth? The air, it enters inside the nose and as well as your mouth, so that the air will go and pass through what? Through your lungs. Understand? So that it will reach the lungs. Your nose and your nostrils, they mainly takes parts in that. Did you understand? Next is okay. So पहला क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऊपर वाला है, नोज, नाक और मुंह. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हवा है, एयर है, यहाँ पे इसके अंदर घुस जाता है. क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर जाना चाहता है कि नहीं? तो इसकी वजह से पहले नोज और माउथ के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट इज nasal cavity. So this is the nasal cavity or nasal passage. So in this nasal cavity or nasal passage, what happens? Same thing. The air comes inside this so that it will go and enter into the lungs. तो नेक्स्ट क्या है? nasal passage, ये तो फिर nasal cavity भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हवा अंदर घुसने के लिए लंग्स के अंदर ये लोग काम करते हैं. Okay, is it clear everyone about nose and mouth and nasal cavity?
Is it clear? Yeah, ma'am. Okay. Next is sinuses. So these are the type of sinuses that you will get, that you will find. तो ये जो सारा साइनस है या साइनसेस है, ये मतलब तुम लोग को मिलेगा. ठीक है, फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, नेक्स्ट क्या है मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइड साइनस. ये सब जो साइनस है यहाँ, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा. अपर मतलब ऊपर. So all these sinuses you will be getting in your upper respiratory tract, upside. So what happens here in these sinuses? You will find that there is a hole in between the bones in the head. Means what? This is your head, isn't it? So there will be a hole in each side of the sinuses. So what will happen here? When the air will enters inside the sinuses, it it will help in humidity. Humidity means what? They will help in balancing the temperature. Pressure. Yes. So they will help in maintaining the atmosphere, or maybe the amount of water vapor which is coming from outside the body. Sorry, yeah, from outside the body. You are inhaling the air from outside the environment. It's not it. So these sinuses, they will help you in what? They will help you in maintaining the atmosphere of the water vapor, or else the atmosphere of the gas which is around you, so that you will be able to handle the gas, or you will be able to handle the so to say the environment. Understand? So you will be able to adjust with it. So it means that. तो यहाँ पे साइनसेस पे क्या होगा, यहाँ पे जो साइनसेस है, इन दोनों के बीच में एक होल मिलेगा, छेद मिलेगा. ठीक है, मतलब हैट में. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब तुम लोग सांस लोगे बाहर से, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है या जो बाहर का गैस है, ये साइनसेस मतलब जो वाटर वेपर है, जो गैस है, जो बाहर से आ रहे हैं, वो लोग बैलेंस करेगा, ताकि तुम लोग अच्छे से क्या बोलते मेंटेन करो. ठीक है, ताकि तुम्हारा बॉडी में एडजस्टेबल हो, एडजस्ट होने के लिए ये मतलब मदद करते हैं. So that your body will be able to tolerate it, not too hot, Tolerate. not too cold. Understand? So in that way you can handle it. If you understand, ताकि तुम लोग सहन कर सको इसको, ये साइनसेस मदद करते हैं. ठीक है. तुम पहले से थोड़ा समझेंगे ना हाँ फाइनेंसेस हाँ मुक्तर, आई. फाइनेंसेस थोड़ा हाँ, हाँ फिर रिपीट कर दीजिए ना वो. repeat. Okay. So this हाँ is the sinuses that you will find in the upper respiratory tract. So what are the sinuses that you will find? Frontal sinus, ethmoid sinus, then Maxillary. maxillary sinus, then sphenoid sinus. So all these type of sinuses you will find in it. And all these Ma'am, sinuses, what do? There is a hole inside it. Understand? And inside that hole, what will happen? The air will enter inside it. And after entering, what will they do? They will help in humidity. Humidity means what? And they will help you in maintaining the temperature, or else the vapor which is coming from the outside world, so that you will be able to tolerate the gas, or the vapors which is from the outside, which won't affect, I mean, which will be tolerable for you to inhale it. To understand, मतलब तुम लोग का शरीर के लिए वो टॉलरेबल होने के लिए, ठीक है, मतलब तुम लोग सहन कर कर पाने के लिए ये मतलब मदद करते हैं. ठीक है, समझ में आया? थैंक यू.
Okay. Next is throat or else pharynx. Wait, I'll show you. Can you see this? Can you see this? Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is the pharynx or else throat. Pharynx. Okay, now let's see what do you mean by pharynx. So pharynx. So what happens? Same thing, the air will enter inside the pharynx so that they will go and enter into the lungs. So here was the pharynx, isn't it? So the air will enter inside this. I mean, we have a nose, then nostrils, then nasal cavity, then pharynx, also known as throat. So that it will enter and it will go to the where? To the lungs. The air will go and pass to the lungs. It will happen there. Okay, is it clear? नेक्स्ट क्या है थ्रोट नहीं तो फिर फेरिंग्स भी बोल सकते हो ये यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हवा अंदर घुस के ये लंग्स के अंदर चला जाएगा ठीक है इज इट क्लियर नेक्स्ट इज वॉइस बॉक्स और एल्स larynx yeah this one Ma'am, what is the difference between larynx and pharynx, ma'am? larynx and pharynx is both different thing pharynx they are the throat and Yeah. larynx they are known as the voice box Yeah. the pharynx comes first then after that the larynx pharynx पहले आते हैं उसके बाद larynx आता है और pharynx throat है और pharynx voice box है okay so this larynx what do they do this larynx they helps the air okay they helps the air so that it will go into the lungs so that it will go into the lungs and the larynx they will stay away they will keep out means what they will avoid not exactly avoid also they won't allow I mean whenever you drink whenever you eat something the larynx they will stop it so that it won't go and enter into the lungs do you understand so who will take the part in it? Esophagus. You remember no? In the digestive system we have discussed about esophagus. It won't enter in the larynx. Whenever you eat something, whenever you drink something, so it will go to the esophagus. Understand? It won't go to the larynx. It won't disturb it. It means to say that. तो larynx क्या है larynx वॉइस बॉक्स से बोलते हैं तो ये larynx का काम क्या है ये जो हवा अंदर जब तुम सांस लेते हो इनहेल करते हो हवा अंदर घुस जाते हैं कि नहीं तो वो सारे हवा लंग्स पे जाने के लिए मदद करते हैं और जब तुम लोग खाना खाते हो और पीते हो पानी जूस वगैरह तो वहां पे क्या होता है larynx के अंदर नहीं जाता है ठीक है ये मतलब रोक देता है तो कहाँ पे चला जाएगा हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में सीखा था ना इसोफेगस के अंदर चला जाएगा ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन Yes, ma'am. okay okay next is lower respiratory tract so in the lower respiratory tract what will you find first you will find lungs this is your lungs next you will find trachea this is your trachea which is also known as windpipe from here the wind comes and this is like a pipe next is what next is bronchi this is the bronchi and next is bronchioles so these are bronchioles
All this just like branches, na? They are like they are known as bronchioles. And next is alveoli. Alveoli we will discuss in the next slide. I'll show you this one. All these are alveoli. Understand? All these are alveoli. So these are the organs that you will find. These are the parts, you can say. These are the parts of the lower respiratory tract. तो ये जो सारे मैंने दिखाया है अभी, जैसे कि ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ये जो होते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब, और एल्वियोलाई, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है. ठीक है. Okay. First is trachea. Let us discuss about trachea now. So this is trachea. So this trachea, what are they? They connect from your throat. This is your throat. They connect from your throat to your lungs. Okay. They connect. I mean, the trachea. There are a passage. Passage means what? There are a way. You can say there are a way connecting in between your throat and your lungs. Okay, in between your lungs and your throat. They are the passage. They are the way, you can say. तो ये जो ट्रेकिया है वो क्या है, मतलब ये थ्रोट, यहाँ पे थ्रोट है कि नहीं, थ्रोट और लंग्स के क्या बोलते हैं, पैसेज है, मतलब वे है. ठीक है. नेक्स्ट इज bronchial tubes. So bronchial tubes are this one, this. So the bronchial tubes, they are at the bottom of the windpipe. Means what? They are situated in each side, left side and right side. Understand? They are at the bottom. Bottom means what? At the last. This one. Here and here. तो bronchial tubes क्या है? Bronchial tubes मतलब वो लोग सबसे नीचे में है. हाँ? They are connect to each other, both side. Connect to each other means what? They are connected to each lung, not each side. They are connected to each lung. One, you have two lungs, isn't it? So they are connected to each lungs. They are at the bottom. Bottom means At last. down, below. Yeah. Okay. मैम हाँ. मैम एक्चुअली 2 पेयर्स ऑफ लंग्स होता है, तो मैम ये क्या एक बार एट ए टाइम एक ही साथ वर्क करता है या मतलब बारी बारी से, एक एक्सहेल नहीं, के लिए एक और एक साथ, इनहेल के लिए? एक साथ काम करते हैं. ठीक है. अविनाश. यस मैम. हाँ, एक साथ काम करते हैं वो लोग. ठीक है. हाँ हाँ. Okay. हाँ. Okay. Next is lungs. So this is lungs. Two lungs you have. So what do? They remove oxygen from the air and they go into the blood. Understand? This you have got two lungs. What do? They used to remove oxygen. वो लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है. कहाँ से? एयर से. और कहाँ पे चला जाता है? ब्लड के अंदर चला जाता है. नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब कैसे रेस्पिरेशन takes place करते हैं. How the respiratory system takes place. So what will happen from the lungs? I mean from your lungs, it will go and deliver. I mean who will go and deliver the oxygen? They will go and deliver to what? I mean with the help of your bloodstream. With the help of your bloodstream, your lungs, they will go and supply to all your organs with the help of your bloodstream. It will go and supply to what? To your organs as well as your tissues. And who is responsible for all this? Your muscles and your bones. Your muscles and your bones, they helps in what? They helps in this respiratory system. They will help the air. They will help the air to move so that you will be able to inhale inside as well as outside your lungs. Understand? So in this part, the diaphragm is the muscle. So diaphragm is the muscle that helps you.
I mean, while breathing, they help your lungs to pull in the air and to push out carbon dioxide, the diaphragm. And in bones, what will you find? You will find ribs. So the bones that is in the ribs, what will you find? They help both your heart and the lungs in functioning it. It's not it. I'll repeat again. So in this system of respiration, what will you find? Your lungs. Your lungs, they will go and deliver oxygen. I mean, they will go and give oxygen to all your organs as well as your tissues. With the help of what? With the help of bloodstream. the bloodstream. And in this respiration, what will you find? You will find that your muscles and your bones. They both play an important role in in our body. For respiration. For respiration, understand? And Yeah. in the muscles, what will you find? Diaphragm. Diaphragm is a muscle. And in this diaphragm, what will you find? They will help your lungs so that they will take in oxygen and they will expel out carbon dioxide. They will help in that. And in bones, that is ribs, it helps you in what? It helps you in protecting. They will stay in the exact place. Understand? They will, so that they will stand still. They will be in the proper place. So your ribs helps you in that. Ribs means what? Your rib cage. You remember, no? In bones we have studied. So in that it will help you in that. तो क्या होगा सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन में? हम लोग का जो लंग्स है ये ऑक्सीजन देगा. किसको देगा? हम लोग के ऑर्गन्स को देगा. तो किसके द्वारा ये देगा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सप्लाई करेगा. ठीक है. और ये सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या मिलेगा? मसल्स और बोन्स. मसल्स और बोन्स एक साथ काम करते हैं. ठीक है. और ये मसल्स क्या है? ये डायफ्राम. ठीक है. ये जो डायफ्राम है कैसे मदद करते हैं हम लोग का? जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस बाहर कर देते हैं, मतलब अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और एक्सपेल बाहर ऑक्सीजन कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, है कि नहीं? तो ये डायफ्राम हम लोग का इसमें मदद करते हैं. और रिब्स, यानी कि रिब केज हम लोगों ने सीखा था ना बोन्स में, तो ये रिब्स या फिर रिब केज हम लोग का कैसे मदद करते हैं? लंग्स और हार्ट को मतलब ठीक जगह में ये रखते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. Okay, next is system of respiration. We will continue again. तो नेक्स्ट क्या है? सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को एल्वियोलाई मिलेगा. पहले लेट अस सी दिस ब्रोंकियल. So this is the bronchiole. Okay, inside the lungs you will see the bronchiole. This is the bronchiole. So this bronchioles, they are like what? They are like small branches. They are like small branches, and they are connected with the alveoli. This is the alveoli. Understand? This is the bronchiole. They are like branches, and they will lead the alveoli. So this is the alveoli. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग को ब्रोंकियोल्स मिलेगा. ये जो सारे छोटे छोटे वो है ब्रांचेस के जैसे है, और ये जो ब्रोंकियोल्स है ये मतलब एल्वियोलाई तक चला जाता है. ये एल्वियोलाई है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एल्वियोलाई. सो दिस आर द एल्वियोलाई. So alveoli, they are like tiny air sac. Tiny air sac means what? They are small. They are just like grapes. They all stay together, clusters. You can see they all stay together. And what happens here in this alveoli? In this alveoli, you will find that there is exchange of gas. It is carbon dioxide and oxygen. So they are small, very small. Okay, they are very small. They are here. They are like air sacs. And here, what happens? Exchange of gas. It is carbon dioxide and oxygen takes place. तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट में एल्वियोलाई. ये जो एल्वियोलाई है ये छोटे छोटे करके है, ये हवा घुस जाते हैं इसके अंदर. ठीक है. कौन सा हवा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन.
ये यहाँ पे एक्सचेंज, दोनों गैस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। और ये मतलब अंगूर का जैसा है, ठीक है, ग्रेप्स अंगूर के जैसा है, मतलब एक साथ सब इकट्ठा होके ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? Still here? Yes, ma'am. Okay. Okay, so we will end up here. In the next class, we will continue capillaries, lungs, lobes, all this. So let us stop here. In the next class, we will discuss about. मैम हाँ, मैम वो एक बार वो सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन उसको शेयर कीजिए ना मैम, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था उसका। ये नहीं ये नहीं मैम, वाला हाँ एक सेकंड। हाँ 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 हाँ, ये तो हो गया ना? हाँ मैम हो गया। Okay, ये वाला हाँ हाँ ये था मैम, ये था। हाँ थैंक यू मैम, हो गया। Okay. Okay then, that's all for today's class.